चलिए क्लास 9th चैप्टर 6 टिश्यू स्टार्ट कर रहे हैं. From the last chapter we recall that all living organisms are made up of cells. In cellular unicellular organisms, a single cell performs all basic functions. For example, in amoeba, a single cell carried out movement, intake of food, and respiratory gases, respiration and excretion. But in multicellular organisms, there are millions of cells. Most of these cells are specialized to carry out a few functions. Each specialized function is taken up by the different groups of cells. Since these cells carry out only a particular function, they do not do it very efficiently. In human being, muscle cells contract and relax the cause movement. Nerve cells carry messages. Nerve cells carry messages are followed to transport oxygen, food hormones, and waste material, and so on. In plants, vascular tissue connect food and water from one part of the plant to other parts. So multicellular organisms show division of labor cells specializing in one function are often grouped together in the body. This means that a particular function is carried out by a cluster of cells at a definite place of the body. This cluster of cells called a tissue is arranged and designed so as to give the highest possible efficiency of functions. Blood, fluid, and muscles are all examples of tissues. A group of cells that are similar to structure and work together to achieve a particular function forms a tissue. Plants and animals make up same types of tissue. Let us compare their structure and function. Do plants and animals have the same structure and do they perform similar functions? How are noticeable differences between the two? Plants are stationary objects that don't move. Most of the tissue they have are supportive, which provides them with structural strength. Most of the tissue are dead, since dead cells can provide mechanical strength. Dead cell mechanical strength easily once need less maintenance. Animals, to the other hand, move in the search of food, mates, and shelter. They consume more energy as compared to plants. Most of the tissue they contain are living. Another difference between animals and plants is in the pattern of growth. The growth in plants are limited to certain regions, while this is not so in animals. There are some tissues in plants that divided throughout their life. These tissues are localized in certain regions based on the dividing capacity of the tissue. Various plants tissue can be classified as grown or meristematic tissue and permanent tissue. Cell growth in animals is the more information, so there are no such demarcation of dividing or non-dividing region in cells. This structural organization of organs and organ system is far more specialized localized in complex animals than even in very complex plants. These fundamental differences reflects the different modes of the life pursued by the two major groups of organisms, particularly in the different feeding methods. Also, the differences adapted for the sedimentary existence on the hand plants and active location on the other plant animals, contributing
to the differences in organ system design. It is with reference to these complex animals and plants bodies that we will now talk about the concept of tissue in some details. Plant tissue यानी meristematic tissue. The growth of plants. Growth of plants, their certain occurs only the certain specific region. This is because the dividing tissue known as meristematic tissue, meristematic tissue known as meristematic tissue is located only these points depending on this region are where they are present. Meristematic tissue are classified as apical, lateral and intercalary. तीन टाइप का मेरिस्टेमेटिक होता है, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी. नाउ सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेमेटिक आर इनिशियली like those of meristem itself, but as they grow and mature, their statistics slowly change and they become differentiated as components of other tissue. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये टॉप पे होता है, इंटरकैलरी इसमें बीच में होता है, लेटरल मेरिस्टेम होता है. एपिकल meristem is present at the growing tips of the stem, and the roots, and increase the length of the stem and the roots. The girth of the increase the length of the stem and the root. The girth of the stem or root increase due to lateral meristem. Lateral meristem को कैम्बियम में कहते हैं. Intercalary meristem is the meristem at the base of the leaves or internodes on their side of the nodes on twins. As the cells of the tissue are very active, they have dense cytoplasm, thin cellulose wall and a prominent nuclei. The lack of vacuole can thin the lack of vacuole will make the consummable receptor cell. Lack of vacuole. Internoted tissue insert internodes on the side of twins. As the cells of the stem are very active होता है, dense cytoplasm, thin cellulose walls and prominent nuclei. Lack vacuole नहीं होता है, and we are the lack of vacuole. Permanent tissue. What happens to the cells formed by meristematic tissue? They take up a specific role in loss of ability to divide. Loss the ability to divide. As the result, they form a permanent tissue. A process of taking up a permanent tissue size and the function called differentiation. Permanent shape, size and function is called differentiation. Cells of meristem tissue differentiated meristematic tissue differentiated to form different types of permanent tissue. Simple permanent tissue. A few layers of cells form the basic packaging tissue. This tissue is parenchyma. Packaging tissue. Basic packaging tissue is called parenchyma. This a type of permanent tissue is consists of relatively unspecialized cell with thin cell wall. They are live cells. जिंदा cell. Live cells. They are usually loosely packed. Parenchyma, thin cell wall, loosely packed, lived cell and
unspecialized cell, so that large space, also large space between the cell, intercellular space are found in the tissue. This tissue provides support to plants and also store food. Support and also store food in some situations. It contains chlorophyll and perform photosynthesis, and then it is called क्लोरेन कायमा में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेसिस करता है. Aquatic plant large air cavity are present in parenchyma. Aquatic plant large air cavity are present in parenchyma. Large air cavities are present in parenchyma to give buoyancy. तैरने में मदद करता है. To the plant to help them float करने में मदद करता है buoyancy, है ना. लार्ज एयर कैविटी जो है क्या करने में मदद करता है, buoyancy टू हेल्प फ्लोट, तैरने में. सच ए पेरेनकाइमा टाइप्स इज कॉल्ड एरेनकाइमा, और इस टाइप को पौधे को क्या कहते हैं, एरेनकाइमा. द एरेनकाइमा ऑफ स्टेम एंड रूट्स ऑल्सो stores nutrients and water. Parenchyma stems and roots also store nutrients and water. स्टोर रूट और स्टेम में स्टोर करता है वाटर न्यूट्रिएंट्स को. द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट्स इज ड्यू टू द अनदर parenchyma permanent tissue. Flexibility in plants is due to another permanent tissue, parenchyma. It allows easy bending in various parts of a plant, leaves, stems, without breaking. It also provides mechanical support to plants. The flexibility of plants due to another parenchyma यानी collenchyma. It allows easy bending to various parts of the plant, leaves, stems, without breaking. It also provides mechanical support. Collenchyma क्या देता है, mechanical support. We can find this tissue in leaf stalk below the epidermis. The cells of the tissue are living, और ये living होता है, elongated and irregularly thickened at the corner. में क्या होता है, मोटा होता है. At the corners there are very little intercellular space, और छोटा intercellular space होता है. उसको शायद पेक्टिन कहता है. उसमें इरेगुलर थिक एट द कॉर्नर में जो थिक एंड होता है, पेक्टिन का ये रहता है बना हुआ सेल वाल. देयर आर इज वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस. पेक्टिन का होता है या काइटिन का, ऐसा कुछ देखना होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा. साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस में लैमेला, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, इंटरसेलुलर स्पेस इनटू longitudinal section, vacuole, cytoplasm, intercellular space, narrow lumen, lignified things. हेलो अमरजीत ठाकुर, हाय. Yet another type of permanent tissue is sclerenchyma. Is the tissue which makes the plant hard and stiff. We have seen the husk of the coconut. It is made up of sclerenchymatous tissue. The cells of this tissue are dead, और ये dead cell होता है. ये sclerenchyma dead cell होता है. collenchyma और parenchyma कौन होता है, लिविंग होता है. ये sclerenchyma dead होता है.
husk of the coconut made of skeletonous tissues. कोकोनट का जो वो छिलका बना होता है स्केलेमस जो है स्केलेमस टिश्यू से बना होता है. दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वाल एंड थिक ड्यू टू लिग्निन. और उसका सेल वाल लिग्निन का बना होता है. सेल वाल लिग्निन का बना होता है. थिक ड्यू टू द लिग्निन केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट्स एज सीमेंट एंड हार्डन देम. लिग्निन क्या करता है? हार्ड करता है. तो सीमेंट के जैसे हार्ड करता है. ऑफ्टन दिस वाज तो वो पेक्टिन का बना होता है. इसका सेल वाल किसका बना होता है? पेक्टिन का. क्या नाम था उसका? कोलेन कायमा का सेल वाल पेक्टिन का बना होता है और ये लिग्निन का बना होता है. लिग्निन का बना होता है. ठीक. और द नो इंटरसेलुलर स्पेस और नो इंटरसेलुलर स्पेस. इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता. और कोलेन कायमा में इसका इंटरनल सेलुलर स्पेस लिटिल होता था, छोटा होता था. इनसाइड द सेल दिस टिश्यू इज पेरेंट इन स्टेम. Parents in stem around vascular bundle in the veins of leaves and in the hard covering to sea and nuts. It provides strength to the plant's parts. Epidermis may be thicker since protection against water loss. Water loss के against प्रोटेक्शन करता है. इस क्रिटिकल द entire surface of the plant has his outer covering of epidermis. Outer covering of epidermis. It protects that the parts of the plant. Epidermal cell on the aerial parts of the plant often secrete a waxy water resistance layer on their outer surface. This aids in protection against loss of water, mechanical injury and invasion by parasitic fungi. Since it has a protective role to play, cells of epidermal tissue form a continuous layer without intercellular space. Most epidermal cells are relatively flat. Often their outer and side walls are thicker than the inner wall. We can observe small pores here and there in the epidermis of the leaves. These pores are called stomata. Stomata are closed by two kidney-shaped cells called guard cells. Kidney-shaped cells called guard cells. They are necessary for exchange gas. स्टोमाटा क्या करता है? एक्सचेंज गैस का एक्सचेंज करता है विद द एटमॉस्फेयर. ट्रांसपायरेशन लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapor also take place through the stomata. ट्रांसपायरेशन भी उसी में होता है. Epidermal cells of the roots whose function is water absorption commonly bear long hair-like parts that greatly increase the total absorptive surface area. In some plants like desert plants, epidermis has a thick waxy coating of cutin, chemical substance with the waterproof quality, on its outer surface. Can we think reason is the outer layer of the branch of the tree different from the outer layer of a young stem? As plants grow older, the outer protective tissue undergoes certain changes. A stripe of secondary meristem replaces the epidermis of the stem. Cells on the outside are cut off from the layer. This forms the several of light चले गया. लाइट चले गया.
बहुत लाइट का इशू है, बहुत लाइट का इशू है भाई। ये कहाँ चला गया अमरजीत ठाकुर? कमेंट देखो, देखो। लाइट चलेगी, लाइट लाइट चली गया। जब से 25 यूनिट फ्री किया ना, लाइट का स्थिति बहुत गड़बड़ हो गया है। बहुत लाइट भागता है भाई। 2 घंटा से लाइट नहीं था, उसके बाद अभी आया तो आधा घंटा में पार हो गया। लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप का था? 2 टाइप का। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता 3 टाइप, 2 टाइप का, 3 टाइप। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप का, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। लेटरल, इंटरकैलरी। आजा लाइट, आजा लाइट, लाइट लाइट आजा। काफ़ी देर लाइट। काफ़ी लेट लगा। अच्छा, एपिडर्मिस से इसी से काम चलाना होगा लगता है। एपिडर्मल से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप का होता है। कौन कौन? एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। एपिकल कहाँ होता है? टॉप पे होता है एपिकल। मेरिस्टेम कहाँ होता है? टॉप पे, टॉप, ग्रोइंग ऑफ टॉप, टॉप पे पड़ता है और रूट में भी होता है। इंक्रीज द लेंथ। और लेटरल क्या करता है? वो लेंथ को बढ़ाता है, गर्थ को भी बढ़ाता है। और इंटरकैलरी नोड और इंटरनोड को बढ़ाता है। नोड और इंटरनोड, नोड इंटरनोड। अच्छा, आ गया, आ गया।
चलिए, epidermal cell of the roots whose function of water absorption commonly bear long hair-like parts of the generally increase the total absorptive surface area. वाटर एब्जॉर्प्शन को पता, रूट का हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो वाटर एब्जॉर्प्शन करता है। रूट में हेयर लाइक पार्ट होता है, वही एब्जॉर्प्शन करता है वाटर को। इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स एपिडर्मिस हैज थिक वैक्सी कोटिंग of coating chemical substance with waterproof quality at the surface of the thick of the region. In this outer layer of the branch of trees different from the outer layer of the young stem. As plants grow older, the outer protective tissue undergoes certain changes. A stripe of secondary meristem replaces the epidermis of the stem. Cells on the outside are cut off from this layer. This forms the several layer thick cork or the bark of the tree. Cells of the cork and dead are completely arranged without intercellular space. They are also have the chemical called suberin in their walls that makes them impervious to gas and water. Complex permanent tissue. The different types of tissue we have discussed until now are all made up of one type of cells which look like each other. Such tissue are called simple permanent tissue. Another type of permanent tissue is complex tissue. Complex tissue are made up of more than one type of cell. All these cells coordinate to perform a common function. Xylem and phloem are examples of such complex tissues. They are both conducting tissues and constitute a vascular bundle. Vascular or conductive tissue is a dis- distinctive features of the complex plants. One of these made possible their survival on the terrestrial environment. Figure इतना showing section of stem can be seen different types of cells vascular bundles. Xylem consists of tracheate vessels, xylem parenchyma और xylem fibers. चार टाइप का ये होता है। कौन कौन? जाइलम कंसिस्ट ट्रेकियाड होता है, वेसल्स होता है, जाइलम पेरेन्काइमा और फाइबर्स 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 फाइबर्स। इसमें जाइलम पेरेन्काइमा सिर्फ लिविंग होता है, इधर ट्रेकियाड वेसल्स फाइबर ये तीनों जो है क्या होता है, डेड होता है। ये तीनों डेड होता है ना। एंड दे आर dead cells. Tracheate and vessels tubular structure that allow them to transport water and minerals vertical. The parenchyma store food and helps in the sideways condition and of water fiber are the mainly supportive in function. जाइलम में क्या क्या होता है? ट्रेकियाट वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। जाइलम पेरेन्काइमा जो है ये लिविंग होता है, इधर ट्रेकियाट वेसल्स फाइबर ये तीनों डेड सेल होता है। स्टोर फूड जाइलम फाइबर आर मेनली सपोर्ट इन फंक्शन, सपोर्ट करता है। फ्लोएम अब देखते हैं फ्लोएम का। फ्लोएम में चार, जाइलम में चार, फ्लोएम में देखते हैं। फ्लोएम इज द मेड अप ऑफ 4 टाइप्स। इसमें भी 4 टाइप्स होता है। सिप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम जो है 4 टाइप का होता है। सिप ट्यूब, कंपेनियन सेल, phloem fiber and phloem parenchyma. Sieve tube are tubular walls with perforated walls. Phloem is unlike xylems in the material can move in both directions in its. Phloem transport food. Phloem transport food and leaves to other parts of the plant. Phloem क्या करता है? अलग अलग जगह पार्ट में फूड को
पहुंचाता है, एक्सेप्ट फॉर फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर डेड होता है, इधर सारा इसमें लिविंग होता है। फ्लोएम आर लिविंग सेल्स है, फ्लोएम फाइबर को छोड़ के सारा लिविंग होता है ना। जाइलम में सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग था, इधर ट्रैकियल वेसल, ये तीनों क्या था, डेड सेल था। और इसमें सिर्फ जाइलम फाइबर को छोड़ के इधर सारा लिविंग है। फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स में, प्लांट्स के पूरे अलग अलग पार्ट्स में। जाइलम क्या करता है, मिनरल्स और वाटर्स का ये करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। अब एनिमल टिश्यू देखते हैं। When we breathe, we can actually feel the movement of our chest. How do these body parts move? For the have a specialized cell called muscle cells. The contraction or relaxation of the cells result in movement. Muscles, the contraction and the relaxation of these cells result in movement. During breathing, we inhale oxygen. Where does this oxygen goes? It is absorbed in the lungs and then is supported to all the body cells through blood. Why would cells need oxygen? The function of mitochondria we studied earlier provide due to the questions. Blood flow and carried various substances from one part of the body to the other. For example, it carries oxygen and food to all cells. It also collects waste from all parts of the body and carries them to the liver and kidney for disposal. Blood and muscles are both examples are tissue found in our body. On the basis of the functions they perform, we can think of different types of animal tissue such as epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and nervous tissue. Blood is a type of connective tissue, and muscle forms muscular tissue. Epithelial tissue, covering or protective tissue in the animal body are epithelial tissue. Epithelium covers most organs and cavities within the body. It also forms a barrier to keep different body systems separate. The skin or lining of the mouth, the lining of blood vessels, lungs, alveoli, and kidney tubules are all made of epithelial tissues. Epithelial tissue cells are tightly packed and form a continuous sheet. They have only a small amount of cementing materials between them and almost no intercellular space. Obviously, anything entering or leaving the body must cross at least one layer of epithelium. As a result, the permeability of the cells of various epithelial play an important role in regulating the exchange of material between the body and external environment and also between the different parts of the body. Regardless of the types of epithelium, usually separate from the underlying tissue by the extracellular fibrous basement and membrane. Different epithelial show different structure that correlate with their unique function. For example, in cells, living blood vessels or living lungs, alveoli, and transportation of substance occurs through the selectively permeable surface. There is a simple flat kind of epithelium. This is called simple squamous epithelium. Simple squamous epithelium cells are extremely thin, मतलब पूरा thin होता है. Extremely मतलब बहुत ज़्यादा ही thin होता है squamous epithelium and flat and form the delicate lining होता है रेशेदार. The esophagus and the
Lining of the mouth and esophagus also covered with the squamous epithelium. Mouth में और esophagus में होता है squamous epithelium. And skin, which the protect the body, is also made of squamous epithelium. Skin भी कौन सा टिश्यू से बना हुआ है? स्क्वेमस, esophagus, माउथ, ये सब जो है स्क्वेमस epithelium से बना होता है. ये extremely thin होता है and flat होता है. Protect the body and made of squamous epithelium. Skin epithelial cells are arranged in many layers to prevent wear and tear. Since they are arranged in the pattern of layers, the epithelium is called stratified squamous epithelium. Where absorption and secretion occurs as in the inner lining of the intestine, tall epithelial cells are present. This columnar, meaning pillar-like epithelium, facilitates movement across the epithelial barrier in the respiratory tracts. The columnar epithelium tissue also has cilia. Columnar में क्या होता है? Cilia होता है, which are hair-like projection in the outer surface of epithelial cells. These cilia can move and their movement pushes the muscles forward to carry it. This type of epithelium is called ciliated columnar epithelium. Cuboidal epithelium, which cube-shaped cell, form the lining of kidney tubules and ducts of the salivary gland, where it provides mechanical support. Epithelial cells often acquire additional specialization as gland cells, which can secrete substances at the epithelial surface. Sometimes a portion of the epithelial tissue fold inward and the multicellular gland is formed. This is glandular epithelium. Connective tissue. Blood is a connective tissue. Why would the called connective tissue? A clue is provided in the introduction of the chapter. Now we look the types of tissue in some more detail. The cells of connective tissue are loosely spaced and embedded in the intercellular matrix. Intercellular matrix. The matrix may be jelly-like and fluid, dense, fluid, rigid. The nature of matrix depends in concordance with the function of the particular connective tissue. Take a drop of blood on a slide and observe different cells present in the under microscope. से हम इसको देख सकते हैं. उसके बाद blood is a fluid liquid matrix called plasma. Fluid matrix उसमें होता है और प्लाज्मा कहते हैं. प्लाज्मा कितना % ब्लड में होता है? 55%. 55% प्लाज्मा होता है. Which red blood cell, RBC, white blood cell and platelets. उसके बाद 45% में ये सारा चीज़ आता है. WBC, RBC, platelets are suspended. The plasma contains protein, salts and hormones. Blood flow and transport gases. Digested food, hormones and waste materials to different parts of the body. Bones is another example of connective tissue. Bone भी connective tissue का है और blood भी connective tissue का. For the framework that support the body, it also anchors the muscles of the support the main organs of the body. It is a strong and non-flexible tissue. What would be the advantage of these properties for bone functions? Bone cells are embedded in a hard matrix that is composed of calcium and phosphorus compounds. Two bones can be connected to each other. By another type of connective tissue called ligament. Another type of connective tissue is ligament. Thus tissue is very elastic. Ligament जो है elastic, बहुत elastic होता है. It is considerable strength. Ligaments contain very little matrix. Tendon connective bones to muscles and
are another types of connective tissue. Tendon, fibrous tissue, great strength and limited limited flexibility. Another types of connective tissue. Cartilage has widely spaced cell of the solid matrix composed of proteins and of sugar. Cartilage smoothens bone surface at the joints are also present in the nose, ear, trachea and the larynx. We can fold the cartilage or the cartilage of the ears, but we cannot bend the bones in the arms. Think of how the two tissues are different. Alveolar connective tissue is found between the skin and muscles, around blood vessels and nerve and in the bone's marrow. It fills the space inside the organ, supports internal organs and helps in repair of tissue. Where are fat stored in our body? Fat storing adipose tissue is found below the skin and between internal organs. The cells of this tissue are filled with fat globules. Storage of the fat also let it act as an insulator. Muscular tissue. Muscular tissue consists of elongated cells, also called muscle fiber. This tissue is responsible for movement in our muscles. Contain special proteins called contractile protein, which contract the relax to cause movement. We can move some muscles. They conscious wills. Muscles present in air. Our limbs move when we want them to and stop when we so decide. Such muscles are called voluntary muscles. These muscles are also called skeletal muscles, as they are mostly attached to bones and help in body movement under the microscope. These muscles show alternate light and dark bands or striations when striations appropriate. As a result, they were also called striated muscles. Cells of this tissue are long, cylindrical, unbranched, and multinucleated, having many nuclei. The movement of food in the alimentary canal or the contraction or relaxation of blood vessels are involuntary movement. We cannot really start and stop, for example, wearing the smooth muscle filled involuntary muscles. Smooth muscles or involuntary muscles control on the movement. They are also found in the ribs of the eye and the uterus. इन्वॉलेंट्री मसल्स जो हमारे हाथ में नहीं है वो खुद ब खुद होता है, उसे स्मूथ मसल्स और इन्वॉलेंट्री मसल कहते हैं. जैसे आई का बंद होना खुलना, यूटरस हुआ, ब्रोंकी ऑफ द लंग्स हुआ. The cells are long with pointed ends, spinal shaped. The uninucleated having a single nucleus. They are also called unstated muscles. Why would they be called that? The muscles of the heart show rhythmic contraction and relaxation throughout life. These involuntary muscles are called cardiac muscles. Heart muscles cell are cylindrical, branched, and uninucleated. Compare the structures of different position of nuclei within the cells. Nervous tissue. All cells possess the ability to respond to stimuli. However, cells in the nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitted to stimulus very rapidly from one place to another with the body. The brain, spinal cord, and nerve are all composed of the nervous tissue. The cells of this tissue are called nervous tissue or neurons.
A neuron consists of a cell body with a nucleus and cytoplasm, from which long and thin hair-like parts arise. Usually, each neuron has a single long part called the axon, and many short branch parts called dendrites. An individual nerve cell may be made up of meter long. Many nerve fibers bound together by connective tissue made up a nerve. Combination nerve impulse allow to the move our muscles when we want to. The functional combination of nerve and muscle tissue is fundamental to most animals. This combination enables animals and move rapidly in response to stimuli. ये न्यूक्लियस होता है, सेल बॉडी ये पूरे सेल बॉडी है। उसके बाद डेंड्राइट्स उसमें एक्सॉन, उसके बाद नर्व एंडिंग सेल बॉडी डेंड्राइट्स एक्सॉन नर्व एंडिंग सेल बॉडी डेंड्राइट्स एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग सेल बॉडी डेंड्राइट्स एक्सॉन नर्व एंडिंग सेल बॉडी डेंड्राइट्स एक्सॉन नर्व एंडिंग Tissue is a group of cells similar structure and function. Plant tissue two main types, meristematic and permanent. Meristematic tissue dividing करता है with the reason plant. Permanent tissue, meristematic tissue once lose ability divided. The difference are simple. So parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, the three types of simple permanent tissue. Xylem, phloem types of complex permanent tissue. Animal tissue, epithelial, connective, muscular, and nervous tissue. Depending on shape, function, epithelial tissue as well as squamous, cuboidal, columnar, ciliated, glandular. Types of connective tissue. Our body includes adipose tissue, bone tissue, tendon, ligament, cartilage, and blood. Stated, stated and unstated cardiac muscle. Three types of muscle tissue. Cardiac इसी में हार्ट आता है, कार्डियक में हार्ट आता है. Muscle tissue, nervous tissue is made up of nerves that receive and conduct impulse. चलिए ये चैप्टर ख़त्म हो गया है तो थोड़ा सा इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो टाइप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू दो टाइप का होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप का होता है, एपिकल, लेटरल, मेरिस्टेम. एपिकल जो है टॉप पे होता है और एक टॉप पे ग्रो करता है और रूट में होता है. उसका लेटरल होता है गर्थ, इसको गर्थ को बढ़ाता है, स्टेम का गर्थ को बढ़ाता है. उसका इंटरकैलरी नोड और इंटरनोड की लंबाई को बढ़ाता है, नोड इंटरनोड की लंबाई को बढ़ाता है इंटरकैलरी. इनके दो टू लेटर में तीन टाइप. उसके बाद आ गया परमानेंट टिश्यू में आता है दो टाइप का. परमानेंट टिश्यू दो टाइप का होता है, सिंपल परमानेंट और कम्प्लेक्स परमानेंट. सिंपल परमानेंट मतलब कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल में आता है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. पैरेन्काइमा थिन सेल वाल होता है, लूजली पैक्ड होता है, लिविंग होता है ना. पैरेन्काइमा उसका लार्ज स्पेस होता है, स्टोरेज करता है फूड को. उसके बाद कोलेन्काइमा क्लोरोफिल होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस करता है. और बायोन्सी होता है, बायोन्सी जो करता है उसको पैरेन्काइमा कहता है. वो हेल्प करता है तैरने के लिए, फ्लोट करने के लिए मतलब हेल्प करता है. उसके बाद कोलेन्काइमा जो मैकेनिकल सपोर्ट देता है. कोलेन्काइमा सपोर्ट देता है ना. कोलेन्काइमा जो लीफ एंड स्टेम विदाउट ब्रेकिंग प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट देता है. उसके बाद आ गया एपिथेलियल एलोंगेटेड स्टॉक एंड इरेगुलर थिकनेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है जो प्रोटीन का बना होता है. उसके बाद आ गया स्क्लेरेन्काइमा जो डेड सेल है, डेड होता है. पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा वो लिविंग है और ये डेड है.
जैसे कोकोनट, हस्क ऑफ कोकोनट, उसमें होता है उसका सेल वाल जो है लिग्निन का बना होता है, लिग्निन का बना होता है, थिक इंटरसेलुलर नोट्स। और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, इंटरसेलुलर स्ट्रेंथ देता है, पार्ट्स थिकर वाटर लॉस करता है। स्टोमाटा किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, गैस एक्सचेंज करता है, ट्रांसपायरेशन करता है। और रूट जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। मैक्सिको डेजर्ट प्लांट में होता है। और ट्यूबरियन कॉल्ड सुब्रियन, दे हैव आल्सो केमिकल अरेंज telecon of the cork shell break three cells cork dead and completely arranged without intercellular space का होता है। they also chemical have the suberin is also will make the in previous gases of water। कॉम्प्लेक्स में आता है जाइलम फ्लोएम, जाइलम में आता है ट्रेकियर वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर और ट्रेकियर और वेसल्स। ये डेट होता है, यह मिनरल्स और वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम कंपेनियन सेल शिप ट्यूब, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर को छोड़ के सारा लिविंग होता है। ये फूड को क्या करता है, लीव और अदर प्लांट्स पार्ट्स तक पहुंचाता है। मेन फूड को जाइलम क्या करता है, जल और मिनरल्स को पहुंचाता है, और फ्लोएम फूड को पहुंचाता है अलग अलग पार्ट में। एनिमल टिश्यू आता है, एपिथेलियल टिश्यू आता है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ब्लड टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल सेल, मस्कुलर। एपिथेलियल टिश्यू कहाँ होता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। एपिथेलियल टिश्यू को प्रोटेक्टिव टिश्यू जो स्किन में हम लोग कहते हैं, स्किन में होता है, माउथ में है ना, सब में होता है, ओसोफेगस में होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है। इंटरसेलुलर स्क्वैमस एपिथेलियम का भी टाइप है। स्क्वैमस एपिथेलियम एक्सट्रीमली थिन, बहुत थिन होता है, फ्लैट होता है, जो माउथ, ओसोफेगस और स्किन में पाया जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सेक्रेशन इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन में होता है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कोलमनर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सीलिया प्रोजेक्शन सीलिया में होता है। क्यूबाइडल ट्यूब लाइक लाइनिंग किडनी ट्यूब डक्ट सेलिब्रिटी ग्लैंड में होता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, सेक्रेट ग्लैंड करता है। कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, जेली फ्लूइड डेंस रिजिड एंड फंक्शन लाइक। ब्लड में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, 55% होता है, 55% प्लाज्मा होता है, 45% आरबीसी रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होता है। और बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, नॉन फ्लेक्सिबल मतलब फ्लेक्सिबल ऐसे नहीं कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग होता है। बोन सेल्स कैल्शियम फॉस्फोरस कंपाउंड्स का बना होता है ना, कंपोज्ड कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड का बना रहता है। टू बोन्स आर कनेक्टेड लिगामेंट, बोन से कनेक्ट रहता है, उसको क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। और बोन और मसल से जोड़ता है, जो टेंडन कहते हैं, उसको टेंडन कहते हैं। प्रोटीन एलुलर टिश्यू, स्किन और मसल्स में होता है। रिपेयर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू स्किन प्लेट होता है। मस्कुलर टिश्यू फाइब्रस होता है। कनेक्टिव प्रोटीन कॉन्टैक्ट रिलैक्सेशन होता है। वॉलेंट्री मसल, स्केलेटल वॉलेंट्री मसल अटैच्ड टू द बोन्स, bony structure. Striated muscles, they are tissue long, cylindrical and unbranched. Striated muscle unbranched होता है, and the multinucleated होता है, having many nucleus, और बहुत nucleus होता है। Movement of food, alimentary canal, contraction of relaxation of blood. Involuntary movements cannot be started of the smooth muscles, involuntary होता है। Involuntary muscles control the movement of the iris of the eye, uterus, bronchi of lungs. Spinal shape of the striated muscles called striated muscles. Uninucleated मतलब न्यूक्लिएटेड नहीं होता है। स्टेटेड में होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत न्यूक्लिएटेड होता है।
स्ट्रेटेड मसल्स में आता है। यूनिन्यूक्लियोटेड उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। हार्ट एंड रिदम एंड ग्रोथ मसल्स, कार्डियक मसल से सब होता है, हार्ट मसल से सेल होता है, यूनिलेटेड ब्रांच सेल होता है। नर्वस टिश्यू इसमें ब्रेन स्पाइनल कोड नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू न्यूरॉन अदर नर्वस टिश्यू साइटोप्लाज्म थिन हेयर लाइक आइरिस एंड एक्सोन parts of axon neuron part long part of the axon. How many short branches have the called dendrites? Short branches, छोटा छोटा branch होता है dendrites and the nerves many parts bound together connected made of nerves. Axon impulse of the muscle want to relation nerve and nerve cells. Muscle tissue is fundamental is most animals, but combination embedded animals होता है। सेल बॉडी डेंड्राइट एक्सोन, एक्सोन यहाँ से यहाँ तक एक्सोन नर्व सेल, ये वाला भाग नर्व सेल का था, ये पूरा एक्सोन, ये सेल बॉडी, ये पूरा सेल बॉडी में होता है डेंड्राइट से छोटा छोटा जो डेंड्राइट्स होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूरॉन यूनिट, न्यूरॉन का क्या यूनिट है नर्वस टिश्यू। कौन चैप्टर है ये, बड़ा चैप्टर कल पढ़ते हैं। चलिए आज का टिश्यू चैप्टर ख़त्म, हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।